Hello and welcome to Kashmir Now. I'm your host Lipakshi. Let's take a look at some stories of this week's episode. Massive protests erupt in illegally occupied Gilgit-Baltistan over black marketing and shortage of food supply. Kashmiri youth getting trained in various skills at rural self-employment training institutes or RCTs. Avinash Khajuria from Jammu quits his high-profile job to become a dairy farmer, now inspiring others. Indian Army organizes a free medical camp at a border area in Punj. And later in a section of Incredible India, we'll take you to immerse in this year's Makar Sankranti festivities. Protests have rocked several areas of illegally occupied Gilgit-Baltistan over the shortage of food supply and black marketing. It's been more than a month since demonstrations are going on, but the government doesn't seem to pay any heed. Protesters say neither the government is restoring the wheat quota, nor is it taking steps to curb the rampant corruption. We have a report. At a time when illegally occupied Gilgit-Baltistan is already suffering due to harsh weather conditions, the severe shortage of food supply is rubbing salt on their wounds. People have come out on roads and are protesting against black marketing and corruption. They say they will continue the agitation until wheat quota is restored and a standard quality of wheat flour is made available to them. As of now, they are forced to buy flour at high prices due to its poor supply at ration depots. हमने 3300 रुपए पे आटा खरीदा है, तो हमारा ये ऊपर बड़ा जुल्म है सर। इस वक्त हमारे ये देखे सारा उम्मत की हालत, तो रिक्वेस्ट है कि हमारा हक दिया जाए। कब से नहीं मिल रहा है सर? हमें तीन महीने से नहीं मिल रहा है। हमारा घर में 20 नफरी है, यकीन मानो ये की कसम झूठ नहीं बोलता। 3 महीने क्या करें, हमें ये नहीं होता तो वो बच्चे तो मर जाते। At many stores, only fine wheat flour or maida is available, and locals have no other option but to buy it. High consumption of maida raises bad cholesterol and lead to several health problems, but the government seems to be least bothered about the health of its people. The local residents in Skardu blame the Pakistani authorities for black marketing and raising the price of wheat flour in the region. They say, while the 20 kg of superior wheat flour in Punjab is sold at Rs 1200, in Skardu, even fine wheat flour of the same amount is being sold at Rs 1600. इस आटे और गंदम का जिम्मेदार मुकामी इंतजामिया और सिविल सप्लाई ऑफिसर्स है और वजीर खुराक इसमें मुलविस है। वरना जो है स्कर्दू में आटे की कमी बिल्कुल होनी नहीं चाहिए थी। हर जगह पे आटा चोरी हो रहा है, फाइन आटा बन रहा है। आप देखें जो बेकरियों में आटा जा रहा है, ये कहाँ से जा रहा है? आप देखें तंदूरों पे जो आटा जा रहा है, ये कहाँ से जा रहा है? पंजाब में तो आपको पता है 20 किलो आटा जो है वो 1200 रुपये का मिल रहा है सुपुर। यहाँ पे फाइन जो है 1600-1700 रुपये का मिल रहा है। तो ये कहाँ से पैदा हो रहा है? ये यहाँ की कोई कारगिल से तो ये आ नहीं रहा है। तो इस पे फौरी तौर पे इंतजामिया को एक्शन लेना चाहिए, पाबंदी लगाना चाहिए कि भाई फाइन जो बन रहा है फ्लोर मिलों में उस नंबर को ही सील किया जाए। Having reached saturation, the people of Gilgit-Baltistan have started demonstrating intensively against the corrupt practices of the government. However, Pakistan, on the contrary, has also ensured that people in this illegally occupied region continue to reel under its misrule that provides a life riddled with discrimination and misery. It is said that youth of a nation is a major driving force towards its development and prosperity. With proper training and guidance,
the young workforce can turn out to be the most valuable resource for the country. Moving on the same lines, Jammu and Kashmir administration is imparting training to youngsters in various skill development courses under an initiative of Ministry of Rural Development. Take a look. Skill development is a vital tool to empower people, to safeguard their future and for the overall development of an individual. Moreover, being an important aspect that enhances employability in today's globalization, providing training to youngsters in skill development courses can really do wonders for the nation's progress. In Jammu and Kashmir, several rural self-employment training institutes or RCTs have been established across the territory to train youngsters in their respective courses. One among them is in Kulgam, where scores of girls are getting trained in various trades like cutting, tailoring, fashion designing, makeup and many more. Operational since 2011, the institute imparts training to around 300 girls every year. The director of RCT Kulgam says that our motive is not just help the candidates seek employment, but generate employment as well. मेन पर्पस यहाँ यही है गवर्नमेंट की इंडिया की तरफ से कि ये हमारे गाँव की बच्चियाँ जो है ये बच्चे हैं पढ़े लिखे बच्चे हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, वो किसी के सहारे ना जिए बल्कि वो सहारा अपने लिए खुद तलाश करे। उसके लिए उन्होंने ये इदारा कायम किया है जिसका नाम है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यही तो हमारा मकसद है कि उनको हम सिखाते हैं कि आप बेटा एंटरप्रेन्योर बने। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नॉट ओनली द स्कोप बट आल्सो दे शुड जनरेट द एम्प्लॉयमेंट। Recently, a valedictory function was held at the institute wherein certificates were distributed among the candidates who have successfully completed their training. This certificate issued by an RCT will help them avail credit linkage assistance by the banks to start their own entrepreneurial ventures. The trainees appreciated the institute's endeavors to keep them abreast of latest processes and technologies and help them become self-reliant. मैंने 2020 से यहाँ पे ट्रेनिंग ली है, तो उसके साथ साथ ट्रेनिंग के साथ साथ यहाँ पे हमें स्किल्स भी दिए जाते हैं और हमें यहाँ पे सिखाया भी जाता है, नॉलेज भी प्रोवाइड की जाती है कि कैसे हम मार्केट में अपना बिजनेस स्टैंड करें। तो यहाँ से हमें बहुत फायदा मिलता है। जेके आरसीटी ने जो भी मतलब यहाँ से मतलब हमें ये किया है प्रोवाइड, ये इनिशिएटिव जो प्रोवाइड किया है, इसकी वजह से बहुत सारी लड़कियाँ इंडिपेंडेंट हो रही है। जैसे कि हम फैमिली पे डिपेंडेंट होते हैं अपने पैसों के लिए, अपने डेली नीड्स के लिए, तो उस हिसाब से हम वहां से इंडिपेंडेंट हो गए हैं। तो मैंने यहाँ से अभी हमें एक सूरत यहाँ से एक रिसोर्स भी मिलता है यहाँ से कि हमें लोन मिल सकता है, हम यहाँ से लोन निकाल सकते हैं, तो ताकि हम अपना इनिशिएटिव यहाँ से मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। Managed by banks with an active cooperation from the Government of India and state governments, RCTs are established under an initiative of Ministry of Rural Development. One RCT is in every district of the country and offers free and intensive short-term courses to ensure necessary skill training and skill upgradation of the youth. Free lunch is also provided to trainees at many of these institutes. Once the youngsters get trained here, they will be free to access any scheduled bank for a loan or credit.
यहाँ तो सब कुछ फ्री में, जब मैं यहाँ आई हूँ तो कुछ भी फॉर्म के लिए जो यहाँ पे फॉर्मेलिटीज थी फॉर्म के रिलेटेड कुछ भी हमें पैसे वैसे कुछ भी नहीं, और साथ ही यहाँ पे ये जो फूड हमें फ्री में मिलता है। और जो ये मुझे इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है, मेरी एक फ्रेंड है वो यहाँ पे थी, तो उसी ने मुझे बोला कि बहुत अच्छा वहाँ पे जो ट्रेनर है हमारी निगहत में बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो फिर मैं यहाँ आई हूँ इस ट्रेनिंग के लिए। जो यहाँ हमारे टीचर है डायरेक्टर साहब, उन्होंने बोला है कि अगर आपको कुछ लोन्स भी चाहिए, अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं अपना बिजनेस, अपने मतलब कदमों पे स्टैंड होना चाहते हो, तो आपको मिलेगा लोन यहाँ पे। Skill development is considered one of the critical aspects for job creation in India. Such initiatives will go a long way in giving a push to entrepreneurial culture in the country. Who says a farmer's son doesn't want to be a farmer? Abhinesh Khajuria from Jammu left his high-paying engineering job to follow his father's footsteps, and today he is a successful dairy farmer. Today, let's take a deep dive into his story, which is inspiring many youngsters. At a time when youngsters are leaving villages to focus on high-paying jobs, the story of Abhinesh Khajuria, an engineer turned dairy farmer, is standing out like a beacon of hope. Hailing from Jammu, Abhinesh has done engineering and was working at a multinational company in Gurugram before joining his father's business of dairy farming. He was interested in it since beginning and always wanted to do something in agriculture sector. Therefore, in 2019, he finally decided to ditch his business suits for farmer talks. Once he entered into the dairy business, he worked hard to increase revenue using innovative ways, advanced technologies and engineering experience. He brought high-yielding cows and modernized the dairy with automatic cow milking machines, a bulk milk cooler or BMC, automatic milk bottle filling machines, milk ATM machine and much more. Due to his initiatives today, the count of cows in his dairy farm has increased from 15 to 50. फादर ने इनिशियली एक अच्छा सेटअप बना रखा था, कुछ 15 to 20 काउस का। उसके बाद फिर हमने सर धीरे धीरे इसको ज़्यादा बढ़ाना शुरू किया, ब्रीडिंग पे काम करा, प्लस अच्छी अच्छी जो काउस है वो बाहर से लाके तो 50 तक एनिमल्स हमने तैयार किए। उसके बाद मैंने सोचा सर कि मेरे आने की वजह से यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आनी चाहिए, लाइक अगर मैं जैसे इसमें क्या सहयोग कर सकता हूँ, तो मुझे लगा कि यार डेयरी फार्मिंग को एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरह देखा जाता है, तो क्यों ना इसको थोड़ा सा हाईटेक बनाया जाए, है ना। तो फिर मैंने सर्च किया काफ़ी गूगल पे, यूट्यूब पे, देखा कि अब्रॉड में किस तरह से डेयरी फार्मिंग हो रही है। तो फिर सर मैंने मिल्किंग मशीन यहाँ पे जम्मू में जो फर्स्ट हमारे फार्म पे लगी थी वो इंट्रोड्यूस कराई। उसके बाद जैसे दूध हमारा ख़राब हो जाता था, हम जब अपने काउंटर्स 3 काउंटर्स है हमारे, हम वहाँ पे बेचते थे, फिर उसमें हमने BMC सर लगाया यहाँ पे अपने फार्म पे। तो ये सारी टेक्निक सर मैंने लाई इसमें कि इसको मॉडर्नाइज तरीके से डेयरी फार्मिंग को करने की कोशिश करी है। अब धीरे धीरे सर हमारा जो है अभी 6 क्विंटल के करीब दूध है जो हम डेली हमारी प्रोडक्शन है, हम 10 क्विंटल का हमारा टारगेट है कि हम जाएंगे। Along with other modern equipments, Abhinesh has also installed a TMR or Total Mixed Ration Wagon at his farm. This machine enables weighing, mixing and blending of all the feed stuff into a complete ration, which is then distributed directly to the dairy animals. TMR is an efficient system of delivering nutrients to dairy cattle to help them achieve maximum performance. Besides feeding his own animals, Abhinesh also supplies the feed to the market. Extremely proud of his son, Abhinesh's father says that if educated youngsters will enter into farming, they can make huge profits. ये डेयरी फिर जो इतनी बड़ी सोच इनकी थी कि मैं भी आऊँगा साथ में डेयरी करूँगा और बड़ी डेयरी बनानी है, तो आज ये 2014 में फिर हमने ये शुरू किया। 2015 में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके तो फिर ये दोनों हम
स्टार्ट किया और इन्होंने बड़ा मतलब जो नई टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं TMR मशीन है, जो मिल्क वेंडिंग मशीन है, या ये जो सारा नया जो कंसेप्ट है, ये सारी अवनीश की ही सोच है। In the success story of Abhinesh, government schemes too have played a major role. Making use of integrated dairy development scheme, the 28-year-old procured 50% subsidy on all the latest machines and even the cows he had bought. Using the scheme, many educated, unemployed youngsters have started their own dairy farms in the territory, giving boost to the dairy sector. बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े MBA करके जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो लोग सारे अच्छे ढंग से इस काम को आगे चला रहे हैं। तो कहने का मतलब हमारा मकसद डिपार्टमेंट का कि अगर हम पंजाब से दूध हमारे J&K में आ रहा था तो यहाँ पे दूध फिर यहाँ पे सप्लाई होता। हमारा दूध आज की डेट में यह है कि पंजाब में बहुत कम तादाद में हम इस वक्त J&K में दूध आ रहा है और हमारा अगला लक्ष्य इस 2022 की एंड तक यह है कि पंजाब से दूध आना बंद हो जाए, बल्कि हमारे J&K का दूध जो है इसके बाई प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाए और यहाँ के बाई प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाहर जाएं। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। अब ये दूध के साथ हम महकमा एनिमल हस्बेंड्री, जैसे आप ये यहाँ पे आज मैं यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ खजूरिया साहब की डेयरी पे हम आए हैं। इन्होंने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के साथ बड़े होनहार तरीके से ये फार्मर जुड़े और इन्होंने मेहनत करके ये सब्सिडीज भी कुछ हासिल की और पूरा अपना जो है योगदान जो है ये पूरा यहाँ पे अपने एरिया में भी दे रहे हैं, बाहर में भी दे रहे हैं। Today, along with himself, Abhinesh is employing 10 more people. But this is not all. He is further planning to expand his business by collaborating with other dairy farmers in the region to start a cooperative. He further wants to open up a milk collection center where milk will be procured from farmers at good rates and a milk processing unit where various products like flavored milk, yogurt and other items can be prepared. From conducting awareness camps and seminars to hosting several festivals, the Indian Army has been trying its level best to cater to the needs of the citizens in Jammu and Kashmir. Recently, the Romeo Force of the Indian Army organized a free medical camp in the border area of Salotri in Poonch to help locals avail the healthcare facilities at their doorstep. The Indian Army keeps on taking a number of steps on timely basis to provide their services to the local public and improve their well-being. These uniformed heroes make sure to interact with the citizens and work collectively with them on the ground level. Recently, a medical camp was organized by the Indian Army in the border area of Poonch district of Jammu and Kashmir as a goodwill gesture in the continuation of its commitment towards the welfare of general public. मैं तो आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने ये मेडिकल कैंप लगा के हमारे लोगों की हौसला अफजाई की। और आज मेरे को 20 साल हो गए सरपंच बने हुए। तकरीबन आज पहली बार आर्मी ने ये इस सलोत्री गांव बिल्कुल बॉर्डर के किनारे कैंप लगाया, जिससे हमारे लोग जो गरीब गुरबा लोग हैं पहुंच तक नहीं पहुंच सकते थे। दवाई के लिए यहाँ बच्चे भी आए, यहाँ बूढ़े भी आए और फौज ने उठा के लाए अपने कंधों पे। मैं एक बार फिर आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आइंदा के बाद भी ऐसे कैंप लगाए जाएं। Held in the Salotri village of Poonch, the medical vet and dental camp was aimed at spreading awareness among locals along with giving them proper health consultation. Army doctors did a basic health checkup of all individuals and prescribed them the relevant measures. Free medicines were distributed to the locals. Doctors also gave several advices to them so that they can develop a healthy and a better lifestyle. Locals expressed their gratitude to the army for the noble endeavors. यहाँ पे माजूर, बूढ़े, जवान जो बीमार लोग थे, लोगों ने उठाकर अपने कंधों पे यहाँ पे लाए। तो सबसे पहले हम उनकी आर्मी की तरफ से जो यहाँ पे कैंप लगाए इसका हम
दिल के अथाह गहराइयों के साथ अवाम सलोतरी इनका शुक्रिया अदा करना चाहती है और उम्मीद है कि आइंदा भी ऐसे ये काम सर अंजाम देते रहेंगे। It is due to such initiatives by the armed forces that people, even in the most far-flung areas of the country, are able to avail the government facilities and lead a better life. And next we move to our section of Incredible India, where today we will take you to witness the celebration of one of the most auspicious occasions of Hindus. Popularly known as Makar Sankranti, the festival marks the beginning of harvest season and the end of cold and dry days. Though celebrated with different names and ways across various parts of the country, the zeal and enthusiasm of the occasion remains the same everywhere. India got soaked in festive fever as it observed Makar Sankranti, the most ancient Hindu festival dedicated to God's sun. During this period, sun ends its southward journey and starts moving towards northwards. The festival also marks the first day of sun's transit into the zodiac sign Makar or Capricorn. Though observed as harvest festival, its cultural significance as well as way of celebration varies across the country. In cities lining the holy rivers, especially Ganges, millions of Hindus brave the cold temperatures and begin the day by taking a dip in the holy waters. Their gesture is believed to have the power to wash away all the sins. This year, owing to the pandemic, special arrangements were also done by the authorities. At Ganga Sagar, a village on West Bengal's Sagar Island, drones were used to sprinkle water from river Ganges to encourage visitors to adhere to social distancing. तो पुण्य का जो पानी है वो यहाँ से पानी लाके इधर लाया गया है, उसको स्प्रे किया गया पुण्यती के ऊपर। उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके 50 आदमी से ज्यादा नहीं रहने दिया इधर। तो जो आदमी इधर खड़ा था वो चला गया, दूसरा बैच आएगा, इसलिए जो प्लेस है उसमें सैनिटाइज करने के लिए एक ड्रोन है, चारों ड्रोन हमने यूज किया। In states like Punjab, Himachal Pradesh and in the capital New Delhi, the festival is celebrated as Lohri that commemorates the harvesting of the Rabi or winter crops and also marks the beginning of a new year for the Sikhs. The beats of drums and the inviting flames of a bonfire that defy the freezing winds marks the celebration of this auspicious occasion. As a part of the ritual, eatables such as dry fruits, popcorn, sesame seed and molasses are first thrown in the fire and later served to everyone, spreading abundance and happiness all around. लोहड़ी जो है वो पूरे हिंदुस्तान में पंजाबियों का और बाकी सभी धर्मों का पवित्र त्योहार माना जाता है और इस समय हम लोग तीसरी वेव से गुजर रहे हैं। मैं समझता हूं कि लोहड़ी की अग्नि जो है वो पवित्रता का एक संदेश दे रही है। जहां हम सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क का और वैक्सीनेशन की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं लोहड़ी के इस त्योहार पे हम उस परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी इस अग्नि के अंदर इस बीमारियों को ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द राख करे। In western state of Gujarat, the festival is celebrated as Uttarayan, in which kite flying forms an important ritual. Hundreds of people gather on their rooftops to fly kites and even battle against each other for aerial supremacy. This year, to mark the occasion, the idols at the Swami Narayan temple in the state's Rajkot city were adorned with colorful kites. यहाँ हम आज आए हैं भगवान के आशीर्वाद लेने के लिए। हम हर त्योहार पे आते हैं। आज हमने एक अलग श्रृंगार देखा जो इस त्योहार से मिलता जुलता है पतंग का। हमने ये भी देखा कि भगवान के हाथ में फिरकी रखी है। ये इसका ये मतलब भी हो सकता है कि हमारी जिंदगी की दौड़ भगवान के हाथ में है, इसलिए हमें अच्छे कार्य करके भगवान को खुश रखना चाहिए। In Tamil Nadu, Makar Sankranti is celebrated as Pongal. During the festival, women make beautiful rangolis
cook rice and milk in earthen pots and watch it overflowing. After adding freshly harvested grains, it is offered to God's Son, which is considered as a sign of abundance as it brings fortune to farmers' life. We are celebrating Pongal today, Thai Pongal. During this pandemic situation, we can't go to our friends' home and give the Pongal by preparing it. We can only celebrate by sending photos and messages to our friends. So be safe. Next year, at least next year, we must be celebrated by whole world will be celebrating this Pongal. Now, if you pan towards northeastern India, the festival is observed as Bhogali Bihu, especially in Assam. During the occasion, people erect a traditional bonfire called Mechi, a house made of straw, and burn it during the celebration. Various types of rice cakes and other sweets are also prepared during the festival. ये हमारे असम वासी लोग असम का इसको भोगाली भी बोलते हैं। यहाँ सुबह उठ के हम लोग नहा धो के मतलब आके मेजी घर में आके पूजा करते हैं और मेजी घर जलाते हैं। फिर मतलब इसको फिर सभी लोग एक साथ भोज करते हैं। यहाँ पे बहुत तरह का पकवान बनाया जाता है, पीठा बोलते हैं हम लोग। यहाँ असम में पीठा बोला जाता है। तो उसी के साथ और एक खास एक पकवान होता है, उसको बोलता है कि मतलब टोपला भात। इस मतलब बिहू का एक खासियत है कि लोग टोपला भात बहुत खास मतलब शौक से खाते हैं। Makar Sankranti is not only a festival but also the symbol of life, which shows the incredible diversity of cultures and traditions in India. As entire nation welcomes the harvest season amidst the freezing temperatures and frosty nights and fog, this festival brings warmth of joy and happiness. That's all we have for you in this week's episode. Till we see you next week, it's goodbye from the entire production team.